अच्छा दिन है and we are live yet again. ठीक है. बैक ट्रैकिंग करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यार ये कॉफ़ी तो ख़राब हो गई होगी, इसको फेंकना पड़ेगा. ख़राब नहीं होगी, आई थिंक ये रिस्टोर हो सकती है फ्रिज में रख के. वी कैन गिव इट अ ट्राई. और ये दूध ठंडा हो जाएगा, इसको नीचे रख सकते हैं. Okay guys, let's start our live today. Here guys, let's start. एन क्वींस प्रॉब्लम लंबी है, ये तो कर लेंगे हम. ऐसे ही करना है. ये देखो करते हैं. डीपी की प्रॉब्लम है ये.
क्या दिक्कत है? वेक्टर है क्या? नॉर्डन मैप बनाओ। ठीक है, सेट बना ले, मैप बना लो, सेट बना लो, कुछ बढ़िया बना लो, क्योंकि दोनों तो सेम ही अंडरलाइन रेड ब्लैक ट्री या सेम अंडरलाइन फंक्शन ही होते हैं इम्प्लीमेंट, तो इट डजंट मैटर। हम्म, क्या गलती हुई है? एक एक टेस्ट केस रुको, डीबग करते हैं। तो कैट्स एंड डॉग्स ही निकाल कैसे पा रहे हैं इसने, और क्या है ना हमने, रुको गाइस, टेम्प लिया इसने एम्प्टी, इसने पूरे वेक्टर को मैप में डाल दिया और मैप के अंदर तो मिल गया, मतलब हम उसको कॉनकैटिनेट करके मतलब ब्रेक कर पा रहे हैं। दो ऑप्शन है, ले आना ने, ले लिया तो आगे चलता रहेगा, नहीं लिया तो वही रहेगा, पर हर लेटर आएगा। ओ शिट, हर लेटर आएगा, नॉट टेक ऑप्शन नहीं है। हेलो वर्ल्ड, हेलो हाय,
वाइल लूप से हो गया। चलो वाइल लूप वाला आ गया, ये डिग्री वाइल लूप वाली। बेस केस हो सकता है टू रिटर्न किया, हर रिटर्न में लिखा है। ठीक है, वो सिर्फ लास्ट वाले को देख रहा हूँ।
ऑब्वियसली कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, रुको। काउंट ले लिया, इससे स्टार्ट किया। फॉर लूप वाला DPA ऑब्वियसली, बिकॉज हम सारे इंडेक्सेस को ट्राई करेंगे डाल के, अगर वो करंट में फिर ले जाते हैं। उस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे विच इज नॉन जीरो। ठीक है, हमने प्रीफिक्स स्ट्रिंग बनाते गए। आई शिट, आई आएगा यहाँ पे, शिट शिट। अब चल जाएगा, यस चल पड़ा। अरे यार आई आना था यहाँ पे, रुको अभी कोई टेस्ट केस। अरे ये हमने वैसे मेमोराइज नहीं किया, बट ये TL आ गया, बट हाँ वैसे चल पड़ा। देखो आई को हम मूव करें, दैट इज डायनामिक पॉइंटर, और इंडेक्स को हमने स्ट्रिंग टेम्पो के अंदर ऐड करें, तो एक ही स्ट्रिंग बनती जाएगी हमेशा ए। तो दिस वाज आवर फॉल्ट। आई एम गोइंग टू नाउ मेमोराइज इट। ये गलती है, ठीक है। और देखो टेम्पो की कोई ज़रूरत है भी नहीं, यहाँ पे रिटर्न करो ट्रू। देखो मैं बताती हूँ, ट्रू रिटर्न करो। टेम्पो की कोई ज़रूरत नहीं है, टेम्पो फाइंड करने में ज़रूरत है, देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसको हटाओ यहाँ से, देखो इसको फिर मेमोराइज ना 1D DP में कर देंगे हम। 1D DP में हो जाएगा, लेट मी सी जस्ट 1 सेकेंड। हटाओ इसे यहाँ से, और इसको भी हटाओ। एक बार मैं ट्राई करती हूँ चलाने का। With the for loop you can break, oh shit it worked. So now we will be able to memorize it into 1D DP, because S is also not changing, word dictionary is also not changing. Now I'm going to memorize it. ज़रूरत थी नहीं उसकी, क्योंकि उसकी बस यहाँ पे ज़रूरत थी और वो हमने वैसे कर लिया था। देखो अब मैं इसको बताती हूँ। देखो वेक्टर ऑफ इंट, इट शुड बी bool, क्योंकि आंसर bool में स्टोर हो रहा है। लेट्स टेक इट इंट, क्योंकि बोल के अंदर ट्रू फॉल्स होगा एंड बोथ आर वैलिड आंसर्स, एंड मेमोराइज में हमेशा हम इनिशियलाइज करते हैं विद एन इनवैलिड आंसर, तो पता कैसे चलेगा कि DP इज नॉट फिल्ड और दिस पोजीशन हैज नॉट बीन ट्रेस्ड येट। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट DP, हमारा मूव क्या हो रहा है? 1D DP है ये, तो 0 to 1 मूव हो रहा है, तो जरूरत ही नहीं है 1D DP है। बट आर यू श्योर? यस आई थिंक सो। योर इंडेक्स मूव्स फ्रॉम 0 to size -1 which is s dot size +1, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो DP के अंदर चेक करेगा, तो वो डीरेफरेंस एरर आ सकता है। एंड इनिशियलाइज एवरीथिंग विद -1, पास इट टू दिस वेक्टर DP। दिस इज जस्ट अ 1D DP क्वेश्चन। लेट मी फर्स्ट मेक इट एंड देन आते हैं, मतलब हम भूलते नहीं है भाई चीज़ों को। अगर DP ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, जस्ट रिटर्न DP ऑफ इंडेक्स। Else store here DP of index, and also don't forget to pass it here. It worked. Let me try to submit it now. चल पड़ा। इसमें दो ही कैच थे। एक तो कि फॉर लूप लगा के हम एक डायमेंशन को हटा सकते हैं विच इज़ टेम्पो, क्योंकि अगर टेम्पो को हमने रख लिया तो हमें इसे हर कॉल में देना पड़ेगा, क्योंकि हर कॉल में डिफरेंट होने वाला है। बट फॉर लूप लगाने की वजह से हमने डिटैचमेंट कर ली है एक वेरिएबल की, एक ही हो गया। और दूसरा ये हो गया कि टेम्पो को हटा के हम 1D DP में से कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये स्ट्रिंग होता तो हमें इसे अनऑर्डर्ड मैप से करना पड़ता। अब मैं पास्ट में देखती हूँ मैंने इसे कैसे किया है। TL आया था, मैप डॉट काउंट, मैप रखा है, अनऑर्डर्ड मैप रखा है, स्ट्रिंग रखी है, सब स्ट्रिंग निकाली है, ये किया वो किया, ठीक है। फिर मैंने इसे कैसे किया था? मैंने सब स्ट्रिंग वाले तरीके से किया था, सब स्ट्रिंग 1 सब स्ट्रिंग 2। बट अभी मैंने और नए तरीके से कर दिया, ये और अच्छा तरीका है। मैंने इसे और नए तरीके से करा है, नया तरीका है मेरा।
ओ भाई ये सब क्या क्या हुआ मैंने, वर्ड ब्रेक, कैन ब्रेक, और ये वो इन डिक्शनरी में फंक्शन बनाने की क्या जरूरत थी, वेक्टर की नॉट मैप बना देते हैं, ठीक है। ओ भाई मैंने इसे मेमोराइज किया है भाई, ओ भाई खतरनाक, ठीक है। बहुत गलत तरीके से किया बट वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, मैंने इसे खुद से सही तरीके से कर दिया और मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन कर दिया, ठीक है फाइन। So DP is no DP is I like this topic. I am not good at it. I don't know. I can't say I like it. It is quite logical. बस ये चेक यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर हमने ये चेक नहीं किया तो आगे जाने की जरूरत है नहीं, आगे जाने की जरूरत है नहीं। और इस चेक को अगर हमने यहाँ लगा दिया तो हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि टेम्प हमारे पास हरी जब कॉल में नहीं है, तो वो चेक यहीं लगेगा। ठीक है गाइस, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि इससे इनवैलिड सब प्रॉब्लम्स आके जा ही नहीं पा रही है। हमने यहीं फिल्टर लगा दिया, अगर यहाँ फिल्टर नहीं लगाते तो हम बेस केस में फिल्टर लगाते। डिलीट एंड ऑन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, लेट मी सी, नहीं किया हुआ है यार आज तक, तो पता नहीं, लेट मी ट्राई। ठीक है, nums, you want to maximize the number of points you get by performing the following operations any number of times. Pick any num psi, delete it to earn num psi points, ठीक है। Afterwards you must delete every element equal to num psi minus 1 and every element equal to num psi plus 1. Why am I feeling कि ये binary search का question है? Because there's a range, so you have to pick something, so this is generally binary search. Afterwards you must delete every element equal to this and every element equal to this. Okay, ठीक है। Return the maximum number of points you can earn by applying the above operation. Fine. Let's say 3 4 2, we pick any number and is there a range? No, so binary search नहीं लगेगा, क्योंकि number की pick करने की length can be from minimum to maximum, I don't know, let's see. So this is DP, this kind of question where you have to approach and figure out all. So it can be it can be, because you have to find out all ways of solving it. So it is naturally DP, but we can optimize into binary search, which is n log n. DP if it is 2D, DP it is n square. But I don't think so this is a binary search question, because binary search generally requires a range. Otherwise your n will not be definite. N should be definite in order to become n log n. Fine. I don't know, this is just my blabbering. Oh wow. Oh, so many people. Grigori. Hello Tanuji. Hello. What's the time there? It is 13:05, 1 p.m. It's 1 p.m. It is very sunny day today, and I think the parks are going to be very crowded today. I am not going out because obviously I am laid off, so I'm searching a new job. But it is quite sunny today, and therefore my blinds are also not fully up because of tanning. Hi Sunshine Didi. Hi, hello, hi. Hi Tanuja, how are you? Fine, I'm fine. I hope all my subscribers they got the news about what is happening at Meta. And sadly it has happened to me too, but it's fine. I will recover, hopefully. I don't know, but fine. और इतने टाइम से मैं मतलब ऑफिस का काम कर रही थी पूरे दिन, बट वो लूप से नहीं निकल पाई। वो पिछले साल वापस वही, पिछले साल हम लाइव आके पढ़ाई करते थे, एंड सैडली यहाँ आके भी फिर से मुझे वही पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। कल हम 8 घंटे लाइव थे, मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी थी, और अभी 1 बज रहे हैं, तो मुझे आई डोंट नो 1 घंटा हो गया लाइव में, नहीं आधा घंटा हो गया। उससे पहले मैं कुछ और पढ़ाई कर रही थी।
और आज का मेरे पास पूरा दिन है, मैं 12 घंटे तो नहीं रहूँगी, 10 घंटे का मैं ट्राई करूँगी लाइव रहने का. No, not aware. What's going on at Meta? Layoffs. Layoffs are going on at Meta. I think this is quite a popular news. It is all over LinkedIn, and people are getting laid off at Meta. They are not getting laid off. Like, there was a layoff drive on 20 May at 4 a.m. and around 20K people got that mail. And sadly and unfortunately, I'm also part of that. Yeah. Fine. So let's say that, can we sort it? Yeah, let's sort it. So we have 2, 3, 4. So now this can be a binary search question because we have a range. But fine. Now, let's say we take number 2. We have to delete a +1 and -1. So 2 minus 1, which is 1, and 2 plus 1 is 3. So we delete both. So after deleting 2, we get 2 points. After deleting 3, we get 3 points. Return the maximum number of points by applying the above operation some number of times. And the number of times is not mentioned. Okay. Any number of times. Okay. And then you're just left with 4. So you have to just delete 4. So it is 4, 5, 6, 7, 8, 9. No. You perform the following operations. Delete 4 to earn 4 points. 3 will also be deleted. So it is 2. Delete 2 to earn 2 points. Wait. Okay. The numbers that you're deleting, you will not get points for them. So this was my misconception. I'm so sorry. 2, 3, 4. So you keep 4. This is greedy. We are going to only delete numbers which are greater than 4. So if you delete 4, you get 4 points. And this number will be itself deleted. So you sort it in increasing order and start deleting from back. Yeah. Which is a valid answer because you at least get that point. If the left number is less than, it's fine. Otherwise, just move on. Delete the bigger number. If there's nothing obviously on the right that has been deleted, just keep deleting. Let me try to implement it. Int answer, which is initially 0. We sort nums. And then let's start deleting. So let's use a while loop. Okay, now let's just delete it. So, and if I minus 1 is greater than or equal to 0, and answer of I minus 1 is equal to answer of I minus 1, then just delete that. And for deleting that, what we are going to do is just do I is equal to I minus 2. Else we do I minus 1. That's all. And then we just return answer. I don't know. My intuition is this should work. Let's see. Answer. No, it's nums. What the hell? Okay, it worked for this case. Let's see. 2. Oh, yes. We have to use a while loop. While I minus 1 is equal to greater than 0.
Okay, int left, which is equal to I minus 1, while left is greater than equal to 0, and is this do left minus minus, and after that, after this while loop, I is equal to left. No, it's fine. Let me see. What am I mistaking? What is my mistake? Mistakening. It is not a word. Mistakening. I don't think so. It is a word. Mistaking. Yeah, mistaken. Bullshit. So we take 4. We delete or 3. Then we take 2. So the answer, we take all 2. And we take the next 2. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. But that is not a valid solution because we can also do this. We delete 2 and we just delete all of them. So we are left with this. No. If we delete 3, everyone will be deleted. How do we get 9 here? There are 3 3s. Oh shit. 2, 2, 3, 3, 3, 4. If we delete 3, the answer can be 9. This is DP. You won't be able to solve it here. You remember me? Obviously, I remember everyone. I remember you, Manoj. We studied a lot of Leetcode and I got Unisys Bangalore through that. Yes, I remember. I used to ask, like, you had few interviews and I used to ask, like, what was asked in your interviews. And I was quite new on YouTube. I just started around April 2025 and you were you were a part of my YouTube family since then. Yeah. But sadly not able to crack PP Japan. Sad. I hope you will get another best opportunity. Last year you helped me a lot. Yeah. All the best to you too. All the best to everyone. Hope they land their dream jobs. And there is nothing like dream. There's nothing like fang. There's nothing like dream. They just stay happy in their life, which is most important. You can take an example of me. I was always appreciated at my current company before getting laid off by everyone. I used to work 12 hours a day. I got so many awards just in 3 months. Even in my last week, I was on call. I solved all the issues. I got 4 thanks in one day. I knew everything about every microservice in and out, but my complete team was laid off. Fine. So this is not, so we missed this unit case, test case, and this will not be solved by greedy. Have to do DP. So DP should be simpler because we just know which number we've deleted and then we just delete the next ones. If not, we just consider it. So return helper nums starting from 0 and int deleted index, which is, let's say, -1 for now. We're not deleted anything, deleted index. Okay. Int helper vector int and nums index int deleted index. If your index is equal to nums.size, that means you've reached the end. There's nothing more to delete now, just return 0.
Otherwise, take one answer and keep maximizing it, which is initially 0. Now, if nums of index is equal to nums of deleted index, if deleted index is not equal to -1 and then nums of deleted index is equal to this, we also sort it initially, sort your nums array, so that we only have to check in one direction and not in two. If deleted index -1 and let me leave some space here, and nums of index equal to deleted index plus 1, just don't do anything and return int count, which is, you don't get any marks for deleting it. You do nums, you do index plus 1 because you can't delete it. Then you move to, you keep the deleted index the same because you can't even delete it. And answer is equal to max of answer and count. Now, else, if that is not the case, if your deleted index is not -1 or -1, that is not the case, means you have an option of deleting it. And if you have an option of deleting it, because you could delete every possible element in the world, you will have an option of deleting it, or just it's getting deleted from another number. If you don't delete it, will it get deleted? I am not sure. It will just lie around. So you have to delete it. Int deleted. So for deleting it, what we do is you add nums of index plus nums of index plus 1, and deleted index is now your index. And answer is equal to max of answer and count. I am not sure if this is going to work, but we'll try. Type has a name. Oh, sorry. Okay, fine. There is some mistake. If your deleted index is not equal to -1 and your number is this plus 1, if we sort it, we still get an option of deleting it. You always have to move in one direction. We can't leave it. We cannot leave it. We can actually leave it. So let's not sort it. And let's also check here. Nums of index, because you're not getting an option to leave now, is equal to nums of deleted index plus 1. Or it should be -1 here. Then just move further. And else you also have a chance of, this is take, you also have a chance of leaving it. But what if it doesn't get deleted later? That is an issue. What if it doesn't get deleted later? Yeah, I'm missing one case. Because if you sort it, there is a chance that it might get deleted. For the numbers that have seams continuous, there is a chance there, but that don't have, there's no chance of deleting them. Do we run a for loop for this? Like, take it and also delete, and also delete simultaneously. Oh, we take the first not deleted, so we take a vector of pole or something. Or we just update this nums to something -1 maybe, because if all numbers are positive, yes, then we can do that. Yes, I think the solution to this question is for loop
and taking that. Okay, fine. Let me change it. Do not get disheartened. Your work so hard at NCS. I know this is how IT world is now. We have to adopt. Yeah, sadly. I hope you'll get best opportunity this time because you've seen you doing hard work. Thank you so much. Thank you for your kind words and wishes. Really means a lot. You will be appreciated again and will get mental peace again. Yep. Thank you so much. And I wish the same to you too. And also everyone on my YouTube. But we learn from every experience, and my learnings from this is that always prioritize your learnings and your upskilling and not what you're doing at work. Like, just keep it till 9 to 5 and don't get emotionally attached to your company or even your work. It really doesn't mean anything. The world is changing and we need to adapt. Yeah, but thank you. Okay, now let me try this. So we need a for loop. So what we do, we have deleted index. We don't need it. We will run a for loop and we will check all elements which are deleted. Should I sort it? I think so. It will be of n square. If I change the vector, it will not be solved. Okay, the value is 10 raised to power 4. So we have to solve it in n log n or O of n. I don't think this is solvable in O of n. I think we have to first sort it and then use O of n. So sort it. Sort nums dot begin, nums dot end. And that for loop approach will not work because we will have to change nums then. Someone has to delete a number. For deleting a number, we either have option of -1, +1 or the same number. If we choose -1, but we have to sort it, right? If those numbers are multiple, if this number is like, let's say, but then this would not be a number, right? Okay, take all numbers without +1 -1 condition. If there is some of this kind, you can either take this one multiple times or the other ones, or let's say this keeps on continuing, like this is a longest increasing subsequence or a longest increasing sequence. Then let's say there's also 5 5 5. We don't have an option. We will need to do either alternate or take middle. We have only these two options, either alternate or the middle. If we take alternate numbers, we have to compute the sum of all, or actually the product. Like we also consider the contribution. Okay, so 2 2 3 3 3 4. Okay, so the contribution of this, if we take it individual, is going to be what? It's going to be 4, and this is going to be 9, and this is going to be 4. So the overall contribution can either be 8 or it can be 9. Okay. Do this thing. I'm going to solve it with greedy. I don't know. I don't feel it is deeply. Sort nums dot begin. I might lose some test, like some edge cases I'm not able to think of now, but I will at least implement it. So you take the previous number, which is nums of 0, and what you do is you keep taking all the contributions
So keep taking all. You can use a while loop, so it is O of n and log n. ठीक है, bool is lis is initially true. ठीक है, if it is lis, and then what we do, we use a while loop. Int I start from 0. You use a while loop while I is less than nums dot size. And now what we do, while nums of I is equal to nums of I plus 1. Okay, so 0 1, it starts from 0 and 0 and 1 are same. So you do int contribution. Int contribution. We also have another option then to start from here or here. We always start from back because a smaller number would not make sense. 4 9 4. No, but taking a sum is also not a good option. This is a nice question. This is DP question. Delete. We take 3. You can either take 3 and move on, or we can take all sums of 3 and move on. This is a DP question, so what we do? Oh, I understood the point. This is a DP of the for loop. So what we do? I don't know if this will help solve it, but I'm just going to implement what I think will help. We don't need anything else because my concept can be implemented with DP. So helper, vector, int, and nums, int, index. Now what we do is first implement the base case. Now we have to run a for loop and we have these two conditions because they have sorted. So because we have sorted, we also have to, do we have to keep a track of previous? No. Let's say we move to this index. We run a for loop, so we ideally don't have to take an answer which is 0 and we just do a maximum of that and return answer. And we run a while loop, or we run a for loop starting from index I is less than number size. And if your answer is equal to From where have you done your DSA? I'm not done DSA, I'm still practicing. This is Leetcode. After running a while loop, we have two options, either to take it or not take it. If we take it, we have to remove the next one. But there's also a dependency on the previous ones. But it doesn't matter because we start from 0 every time. So we'd get the maximum. Fine. So if we take it, either take the whole of it, or we can't skip it, but we check if the next number is bigger, so it will be deleted.
If not, you have to take the whole of it, because numbers should not be left. But eventually it will always come to that position. Okay, fine. Int sum, which is 0, while nums of while I plus 1 is less than nums dot size, and nums of I plus 1 is equal to nums of I. What we do is sum plus nums of I. Int k is equal to I. Don't change I. K. Okay, fine. Now we either take complete of that. So if we take complete, the next number, if it is going to get deleted, will depend on the previous one. Then we have to skip it. If we are taking it, then we have to skip it. Let's say we took this complete sum, to skip this whole thing, and then while k plus 1 less than nums dot size and nums of k plus 1 is equal to nums of I plus 1 k plus plus. ठीक है? And then int answer is equal to current is equal to sum plus helper of nums and k plus 1. Answer is equal to max of current or answer. But what if we don't take it? If we don't take it, it will be handled by our least stage. We'll always have to take it. But there is also a chance that we don't take it. If we don't take it, then we have int sum 2. We also calculate the sum of this nums of k. Sum 2. Okay. There is another option where int sum, we do this int current 1. There's another option doing this, which is int current 2, which is sum 2 plus helper of nums of k plus 1. So how you started solving Leetcode means what is the roadmap, and please speak loudly so your voice is very low. I am sorry. Sorry, I didn't pay attention. I will speak loudly from now onwards. Manish Sharma, hey. Hi. It should be k plus 1 should not be less than what? K should not be less than nums of size in this. Nums of k. What? Wait, what? It should be here. We are not doing k plus plus anywhere. There is a mistake. Nice one. This is house robber. Yes,
No, this is house robber. How did we used to solve house robber? We didn't sort it, but the same question. This was hard. This was house robber. The only problem is that in house robber, only one adjacent house has to be left. But here, the number of houses can be multiple, which is one problem. Hash map to counter currencies, yes. Fine. A very good question. Very good question. Convert it into house robbers and use hash map to keep account. Shit. Brilliant question. Whoever created this is God. Amazing question. Amazing. Amazing. Really amazing question. And I am sadly going to implement it now. कितना भी टाइम लगेगा हम इसे implement करेंगे. Wow. Finally बहुत अच्छा question. काफ़ी टाइम बाद. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. मतलब एंथ्रोपिक इंटरव्यू में पूछने जैसा क्वेश्चन है, बट ऑफलाइन होना चाहिए इंटरव्यू. हाउस रॉबर्स विद हैश मैप. अमेजिंग. हाउस रॉबर वाले क्रिएटर ने बनाया हुआ है क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत अच्छा. सल्यूट है क्वेश्चन में. बहुत ज़बरदस्त सवाल है. थोड़े से वेरीज बचे हैं. बहुत अच्छा है. अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. फंगस लग गई है इसमें यार. इतनी महंगी लाने के बाद फंगस लग गया है. बहुत अच्छा क्वेश्चन. कोड करना स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा दूध पी लेते हैं ताकि एनर्जी आए और फिर इसको कोड कर देते हैं. इसमें कैलोरीज कितनी है? इसमें शुगर है 4.2 grams, which is fine. 38 calories. Good.
आई लाइक दिस ड्रिंक। चलो गाइस, बहुत अच्छा सवाल है और इसको कोड करके कॉफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब रिवाइज हो जाएंगे, सॉरी। बहुत बढ़िया सवाल। क्या करेंगे? अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सॉर्ट, चलो अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ, ठीक है। बहुत तगड़ा सवाल। और सबका काउंट स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हाउस रॉबर करने से पहले हम सॉर्ट कर लेंगे, जो हाउस रॉबर के अंदर ऑलरेडी सॉर्टेड थे, बगल वाले हटाने थे, पर इसमें बगल वाले हटाने नहीं है, क्योंकि अगर सॉर्टेड नहीं होंगे तो बगल वाले नहीं हटाने होंगे, क्योंकि +1 और -1 वाले हटाने हैं, तो सॉर्ट करते हुए बगल वाले हो जाएंगे, मतलब एडजेसेंट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हेल्पर बनाएंगे, जिसमें नम्स भेजेंगे, आपका मैप भेजेंगे जो चेंज नहीं होने वाला, इंडेक्स भेजेंगे 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? बस तगड़ा सवाल, उसको मेमोराइज भी कर देंगे। इंट हेल्पर वेक्टर इंट नम्स एम अनऑर्डर्ड मैप इंट एमपी, और इसको बाय रेफरेंस भेजो ताकि कॉपी ना बने, इंडेक्स, ठीक है। अगर लास्ट तक पहुंचे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो? कुछ मत करो, रिटर्न करो, क्या करो? रिटर्न 0। नहीं तो आपको क्या करना है? आपको एडजेसेंट वालों को नहीं लेना है, बट एडजेसेंट वाले कौन से को नहीं लेना है? अगर उनका नंबर 1 से ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? पहले लेते हैं टेक वाला, ठीक है। पहले एक आंसर ले लेते हैं जो कि मैक्सिमाइज करने वाला है, या एक काम करो, टेक वाला मत करो, रिटर्न कर दो बस मैक्स ऑफ टेक एंड नॉट टेक। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ डीपी से हमें सॉल्व होने वाला है, या पैटर्न बोल लो। अब इसके अंदर एक ट्रिक है कि सम कैसे कैलकुलेट होगा, वो होगा मैप से कैलकुलेट। तो टेक कैसे होगा? अगर हम टेक कर रहे हैं तो अनऑर्डर्ड मैप के अंदर से काउंट निकालेंगे ऑफ व्हाट? नम्स ऑफ इंडेक्स इनटू नम्स ऑफ इंडेक्स, काउंट इनटू दिस से पूरा सम आएगा जितने हम उनको यूज कर सकते हैं। अगर हमने ले लिए तो हमें सिर्फ साइड वाले तब स्किप करने हैं अगर वो +1 है। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, कैसे निकालेंगे? देखो, अगर इंडेक्स है विच इज 0 और 3 है इंडेक्स पे, मतलब लेट्स से 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है और 3 बार पड़ा है, 0 1 2, तो कौन सा यूनिक वाला इंडेक्स है? लेट्स से 2 पे 2 पड़ा है, तो 0 प्लस द काउंट विच इज 3, सो थर्ड इंडेक्स है द यूनिक इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे? इफ इसमें 2 कंडीशन लगेंगी, इफ योर नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस एक पहले क्या काम करते हैं? काउंट निकाल लेते हैं, इंट काउंट विच इज इक्वल टू मैप ऑफ नम्स ऑफ इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे? अगर तो आपका जो मैप नम्स ऑफ काउंट है, अगर वो मैप्स ऑफ नम्स ऑफ काउंट प्लस इंडेक्स हैं, और ये काउंट प्लस इंडेक्स शुड बी लेस देन व्हाट? नम शॉर्ट साइज, नहीं तो ओवरफ्लो एरर आएगा, अनडिफाइंड मेमोरी एक्सेस एरर, ठीक है। नम्स ऑफ काउंट प्लस इंडेक्स की वैल्यू शुड, इफ इट इज इक्वल टू व्हाट? नम्स ऑफ इंडेक्स +1, क्योंकि सॉर्टेड है तो नम्स ऑफ इंडेक्स +1 होगा। तो हम क्या करेंगे? हम टेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम उसको बाईपास करेंगे, जैसे हाउस रॉबर्स में एडजेसेंट वालों को बाईपास करते हैं, तो हम टेक तो करेंगे पर उसके अंदर बाईपास करके टेक करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया है, पहले टेक को 0 कर दो, या एक काम कर दो, आंसर बना लो, उसको 0 से मार्क कर दो, और हम टेक करने वाले हैं, मतलब इंक्लूड करने वाले हैं, तो ये तो सम हो गया उसका। और हम हमारे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? इट विल बी हेल्पर नम्स मैप इंडेक्स प्लस काउंट, इससे हम पहले यूनिक पे पहुंच गए, प्लस व्हाट? दिस इज द इंडेक्स ऑफ दैट and the count of that. So what you do is int next element index is what? Map of nums of count plus index, and you have to add all of them, like you have to add your index, you have to add your count, and you also have to add the next element.
अभी सबको बाईपास कर जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये टेक वाला हो गया और आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ टेक और आंसर, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे ऑप्शन लिया है नॉट टेक का, क्या हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्या हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हम ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फिर चलते हैं। Am I in the right direction? Should we have to operate on unique values? Shit, this was the crux. We have to operate on unique values. Shit. भाई पिछले आज कल के सेम सवाल में मैंने ये सेम गलती करी थी। शिट, मैंने इस सवाल के अंदर सेम गलती करी थी। पूरा मैंने मैप बनाया, सब कुछ किया, भाई उस मैप के अंदर ऑलरेडी यूनिक वैल्यूज हैं और मैं ओरिजिनल वेक्टर के अंदर जा जाके और उन यूनिक वैल्यूज के अंदर वाइल लूप लगा के हटा रही हूँ। मैप की कीज पे इटरेट कर लो और उसके बाद अब इस सेम सवाल में मैंने सेम गलती कर दी। शिट, हमने मैप बनाया, सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करी, हमने वैल्यूज बनाई, उसको नए वेक्टर में पुश किया और हम नए वेक्टर को सॉर्ट करके उन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। नॉट टेक है तो आगे चलो। टेक है तो पॉइंट्स ले लो, एडजेसेंट है तो स्किप करो। But I have one doubt. So here, like for example, when we are skipping, we are not checking if that number will be deleted by the adjacent one later, and there would be some elements left in the vector. Is that fine? Because then that would even not give an the most optimal answer, and they would be like somehow always ignored, and then they are not going to give an impact. But that is the incorrect solution because there's some value still left. This is where I was like doing that, but then I figured out that this is very good question, and you're thinking about DP state. If we skip a number, and what if the some adjacent deletions affect remaining elements differently? Because of how we define the state, the information is already fully captured. At every index only, did we take the previous adjacent element because of the recursive? This is already encoded by the jump. So even if we are skipping a number, there might be some numbers which are not deleted at the end, but the question is not deleting about all the numbers but getting the most optimal answer. Is that so? Yes, exactly. The question is not delete all the numbers but maximize the earned score, and therefore we're skipping it. Yeah, fine. But why did we skip it here? Let's remove it. Because this thing was already taken care of there. Yes, it worked. This else was not needed. But we also have to... Wait, let me see. Not take is this. Oh, okay, fine. Not take is just don't take it. But otherwise take it. Okay, if it is not adjacent, then take it. Fine. And take plus is equal to this. And take is points. Oh, yeah, fine. Fine. This was a nice question. A very nice question. I love this question. This is definitely one of my favorite questions. I liked it. Nice question. Hash map, house robber. This is house robber plus map.
and iterating over that. So this is house robber plus map question. बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत 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 अच्छा था. हाउस रॉबर के अंदर हमने ये कर दिया था, हटा दिए थे साइड वाले, इसके अंदर नहीं हटाए थे क्योंकि हमने मैप बना लिया था और उसके अंदर वही ट्रेड किया था, ये किया था. इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन. ठीक है, या फाइन. दिस इज व्हाट fine, it's okay. Which question are you solving? I was solving delete and earn. Delete and earn. I don't know what question number this is. Okay, but yeah, it was an amazing question. I really liked it. Fine. ठीक है, ये डीपी क्वेश्चन है. ठीक है, आई थिंक गाइस मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, लंच ब्रेक, and I will meet you in some time. Bye. Stay tuned. 3 दिन मेरे बहुत hectic है next 3 दिन. Is it India? No, this is not India. I don't know if it is. Obviously, this is not India. I am in Ireland. But guys, see you in some time. Bye.